Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a geometry chapter, that is circles. So you have quite idea about this circle and different terms that are related to circle. So let us see what is circle and what are the different terms that are related to circle. So here you have been given with the definition of circle. A circle is a simple closed curve formed by all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. So a circle is a simple closed curve formed by the all points. So see the meaning of this. So here see circle is a simple close curved. तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स डाल दिया है. So it is a simple curved form by all points. तो मैंने देखिए all points को join कर दिया है ना, which are at a fixed distance from a fixed point. तो हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पर पॉइंट से मैंने बनाया है वो पॉइंट जो सेंटर है उससे सब पॉइंट्स सेम डिस्टेंस में है. ओके तो मैंने ये फ्री हैंड बनाया इसलिए थोड़ा बहुत सर्कल में डिफरेंस आ गया है. तो जस्ट सी, तो दिस इज़ अ क्लोज्ड फिगर, कर्व्ड फिगर विच आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स. सो पॉइंट्स ऐसे डाल के हम एक सर्कल बना सकते हैं एंड वी कैन सी दैट ऑल पॉइंट्स आर at same distance from a particular center. Okay, so this is a fixed point. This center is a fixed point. The fixed point lies inside the circle. So whatever is a fixed point that lies inside the circle. Okay, now whatever is inside the area enclosed by the circle is called circular region. So the region which is inside the circle. Now see here the shaded जो पिंक कलर का पार्ट है वो है क्या आपका सर्कुलर रीजन विच इज़ द शेडेड रीजन एंड यू कैन सी द सेंटर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड पॉइंट. Now there are different parts of circle that you are going to learn. So first part is your center. You know center means your a fixed point from where all the points that are on the curved line are of same distance, isn't it? So this is the fixed point. This is known as the center. Now what is radius? Now you can see radius from center to any of the point on the circle. So just underline the distance between the center and any point on the circle is known as radius of circle. So this is the definition of radius. तो radius देखो ये center से कोई भी एक point को join करता है. Okay, so you can draw here, 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 anyway. So the radius is from one point to the center. The line which is joining from center to any one point. Now what is chord? A chord of a circle is a line segment joining any two points on the circle. Now see chord. Chord is here. It is joining any two points. यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप ड्रॉ करोगे एक लाइन तो वो दैट इज़ योर कॉर्ड. इफ़ यू ड्रॉ कॉर्ड हियर, इफ़ यू कैन ड्रॉ कॉर्ड हियर, हियर, एनीवेयर, बट द लाइन सेगमेंट शुड जॉइन टू पॉइंट्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज chord. Now what is segment? A chord divides a circle into two parts and each part is known as segment. Now if you can see ये जो chord हमने बनाया है यहाँ पर तो इसमें क्या हो जाता है ये सर्कल देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ये दिस इज़ द स्मॉलर पार्ट एंड दिस इज़ द bigger part. Okay, so the part greater than half, now chord is drawn here, it is not from center, इसीलिए ये पार्ट बड़ा है ये पार्ट छोटा है.
this is the greater part and this is the smaller part. Okay, so the greater part is known as major segment. तो ये जो बाउंड्री लाइन है ये मेजर सेगमेंट है और ये जो बाउंड्री लाइन है ये माइनर सेगमेंट है. ओके, सो द पार्ट ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कुलर रीजन इज नोन एज मेजर पार्ट and the other part which is less than half of the circular region is a minor segment. Okay, so major segment contains the center of the circle. तो आप यहाँ पर देखिए मेजर जो सेगमेंट है, बड़ा वाला जो सेगमेंट है उसमें अंदर ही सेंटर आता है. माइनर is not having the center with it. Then diameter divides a circle into two equal parts. Now if you consider diameter, यहाँ पे क्या है, ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, एक पार्ट ग्रेटर है और एक पार्ट स्मॉलर है ना. Now if you look to the diameter, diameter देखिए ये लाइन सेगमेंट है which is passing through the center. So as it is passing through the center, it makes the circle into equal two halves. तो ये बीच में से जा रहा है लाइन, इसीलिए इसने क्या किया है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. So the diameter of a circle is also a chord which passes through the center of the circle. It is the longest chord that the circle have. So diameter of a circle is a chord which passes from the center. It joins, the line segment joins one point on the circumference to the other points of the circumference, but it is passing through the center. Okay, so the diameter is the longest chord that a circle have. So diameter is the longest chord, remember this. Now you have in the joining figure AB as a diameter and O is the center through which it is passing. Now you have one formula to find out the diameter or the radius. So please remember this formula. Diameter is equal to 2 into radius. So you can see the diameter यहाँ पर आपको यहाँ पर diameter जो दिख रहा है आपको, radius क्या होता है, ये half वाला होता है. तो यहाँ पर देखिए दो radius हो रहे हैं. So that is why here the statement is diameter is equal to 2 into radius. And what about radius? It is half of diameter. Okay, diameter of the circle divides the circle into two equal parts and each part is known as semicircle. Okay, each part is known as semicircle. Now what is circumference? Circumference is nothing but the boundary. ये boundary को हम circumference कहते हैं. ठीक है, so you can see here PQR is the circumference. So the points are on the line. ये जो curved line है, they are on the line. So these are the circumference. What is an arc? Arc is nothing but it is a part of circumference. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बोल्ट फॉर्म में बनाया हुआ पिक्चर है, यहाँ पर डार्क किया हुआ, that is your arc. It is a part of circumference. तो circumference बाउंड्री है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है and that is called as arc. Now if the length of the arc is greater than half of the circumference, then it is known as major arc. तो major arc देखिए, major arc ये हो जाएगा आपका. So you can see major arc is your, here it is written PAQ and PBQ. Arcs are PAQ and PBQ. So here major arc जो बड़ा arc है वो कौन सा है, PBQ, and the smaller arc is minor arc. Okay, so circumference को भी दो इसमें डिवाइड किया है. Arc means a part of that circumference. So here you can see it is the major arc and this is the minor arc. Okay, now what about sector?
A sector of a circle is the region bounded by two radii and an arc. So sector is the region. तो ये देखिए रीजन, इसमें टू रेडियस होंगे. देखिए ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है और एक आर्क है. सो इट इज़ अ रीजन विच इज़ बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड ए आर्क. सो दिस इज़ अ सेक्टर. सो एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो अ सेक्टर. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो रेडियस और ये बड़ा वाला आर्क है. तो दिस इज़ अ मेजर सेक्टर एंड दिस इज़ अ माइनर सेक्टर. ओके. Now what about interior and exterior? Interior from the word itself, the points which are inside the circle is interior and the points which are outside the circle is exterior points. Now regarding a secant is a straight line which intersects a circle at two distinct points. तो अभी देखिए यहाँ पे secant, this is your secant. सो कॉर्ड एंड सिकेंड. कॉर्ड में क्या है, कॉर्ड सर्कल के अंदर ही होता है. बट सिकेंड देखिए, सिकेंड क्या होता है, ये बाहर आ गया है आपका. तो सिकेंड इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट a circle at two different points. So it is intersecting at two different points. AB is the secant which intersects at the point C and D. तो कॉर्ड और secant में क्या डिफरेंस है, कॉर्ड आपका सर्कल के अंदर ही होता है एंड इट इज़ ए लाइन सेगमेंट. बस दिस इज़ ए लाइन. लाइन में देखिए दोनों तरफ आपके एरोज है, दैट मीन्स इट विल गो ऑन एंड गो ऑन. ओके. सो इट इज़ आउटसाइड एंड इनसाइड द सर्कल, है ना. तो ये है डिफरेंस बिटवीन secant एंड कॉर्ड. नाउ द नेक्स्ट word is tangent. Tangent means it is the line which touches the circle at one point. You can see this line is drawn and it touches the circle. Touch हो रहा है एक point में. So this type of line is called as your tangent. So tangent is a straight line which touches the circle at only one point. The point at which the tangent touches the circle is known as point of contact. So here you have the secant definition and here is your tangent definition where the point R is the point of contact. So here all the terms whatever is written we have just discussed about these points. And we have also seen with the help of figure how we can just go through this different terms. Now let us move to exercise 18.1. Here using the adjoining figure name the following. You need to see the adjoining figure. यहाँ पे जो figure है उसको आप देखिए और accordingly you give the name of that. तो center is O, point O, write down like that. ये point O में center है. tangent कौन सा है देखिए, tangent is this. R and S is the tangent. So write down R and S. R S is a tangent. RS is the tangent. Then next one is diameter. Which is the diameter? AB. AB is the diameter. Then three radii. So OP. देखो यहाँ पे OP है, OA and OB. Okay. नेक्स्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे था, हम लोग का टेंजेंट में था. पॉइंट P इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट. ओके. सो विद द adjoining figure we have just named all the lines. Then what is the length of the largest chord of a circle of radius 6 centimeter? So largest chord means what? Largest chord means your diameter.
So we have the formula for diameter. So diameter is equal to 2 into radius, isn't it? So you have been given with the radius 6. So 12 centimeter will be the length of the largest chord. That is the diameter. Now using the adjoining figure, fill in the blanks. If OA is equal to 3 centimeter, now OA is equal to 3 centimeter. So what about OB? So OA and OB are radius. So you know all the radius are equal. So if OA is 3 centimeter, OB will be also 3 centimeter. The shaded region AOB is a minor shaded region AOB. A. This is a what? This is a minor sector. This is a minor sector. Now, the shaded region bounded by chord CD. Chord CD, the shaded region is a minor, ये क्या हो गया? Minor arc. Is a minor arc. Minor arc, no, minor. सो इट इज़ यहाँ पे मेंशन गया कॉर्ड CD ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनर सेगमेंट लिखना है, नॉट आर्क. आर्क में क्या है, ये आपका जो कॉर्ड है वो नहीं रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट. देन द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द गिवन सर्कल्स आर, सो वॉट एवर पॉइंट्स आर लाइंग इन द इनसाइड द सर्कल. कौन सा पॉइंट है देखिए, point O and point Q. So are O and Q. Others are not there, isn't it? ये point तो exterior है and these are all on the circle. Then the points R and S lie in the exterior, बाहर, है ना. So this is under exterior. Now in a circle, radius r centimeter, length of diameter is, in a circle with radius r, radius का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, नंबर नहीं दिया है, तो लेंथ ऑफ डायमीटर विल बी, डायमीटर हो जाएगा 2r, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. सो रेडियस है r, तो डायमीटर विल बी 2r. लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड इज, so largest possible chord is again the diameter. So what will be its length? 2r centimeter. Okay. Now if the center of a circle is at point A and its radius is 7.5 centimeter, then point P will lie in. So let us see what it means. If the center of circle is at point A and its radius is 7.5 centimeter, then point P will lie in the, so AP is equal to 7.6 centimeter. Lie कहाँ पे lie होगा? In the circumference of the circle. तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप जरा डायग्राम बना के देख लीजिए. इफ़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट पॉइंट ए एंड इट्स रेडियस इज 7.5, सो लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ इट. ये रहा आपका एक सर्कल, सेंटर है ए, हाँ, और उसके बाद क्या बोला है इसमें बोला है कि आपका रेडियस कितना है, रेडियस इज 7.5. Okay, radius is 7.5. Now what is the question? Now question is then point P will lie in the dash of the circle when AP is equal to 7.6 centimeter. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 7.5 है, तो 7.6 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बाहर की तरफ आ जाएगा. तो this will be then P. So this point will be your P. So which is exterior to the circle. And next question is the AP is 5 centimeters. So if it is 5, then here it will be, isn't it?
5 centimeter, this is 7.5, so this will be your P, so it will be inside your circle. तो दोनों केसेस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, P will be outside the circle and in second case P will be inside the circle. So what we are going to write, तो हमने जैसे डायग्राम में देखा था, तो AP radius is 7.5 and you have AP 7.6. That means you are going to write the exterior of the circle. The point P will lie to the exterior of circle when AP is equal to 7.6, and then point P will lie interior of the circle when AP is equal to 5 centimeter. Then the length of diameter of a circle is 9 centimeter. Find the length of its radius. So if D is equal to 9 centimeter, then R will be half of D. R will be half of D. That will give you half into 9. So 4.5 centimeter. Okay. So here the length of radius will be 4.5 centimeter. So ये हमने क्या किया है, ये हमने रेडियस, डायमीटर हमको पता था 2r है, तो रेडियस will be half of D. Then next question, the point A lies on the circumference of circle with diameter 10 centimeter. If O is the center of the circle, then the length of OA is. So again we will just draw a diagram and then we will find out. Now again just read the question. Point A lies on the circumference of a circle with diameter 10 centimeter. If O is the center and of the circle, then length of OA is. So according to question C here, what happens? Point A lies on the circumference. तो देखिए यहाँ पर point A है, ठीक है, और point O is the center. Now what happens? The point with diameter 10 centimeter. Now if you draw the diameter like this, it will be 10 centimeter. Okay. Now if you draw the diameter straight also will do. ये रहा, ऐसे बनाइए 10 centimeter, और यहाँ पे suppose A point है, वो भी चलेगा. Like that also you can make, this way also you can make. Now what happens? If O is the center of the circle, then length of OA. So what will be the length of OA? Now you know that this is a radius. Suppose I have taken this point as C. So this will be also a radius, that is OA. So since the diameter is 10 centimeter, diameter 10 centimeter है, तो इसको यदि हमने BC ले लिया है, so BC is the diameter which is 10 centimeter. So what about OC? OC will be half, that is 5 centimeter. So if OC is 5 centimeter, so OC is the radius. So OA and OC both are radius. So OA will be also 5 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पर BC is diameter is 10 centimeter. Now we know that OC is the radius. Now that will become 5 centimeter. Now you can see here any line which is joining the center and the point on the circumference is also a radius. So OE is again a radius. So it is 5 centimeter in length. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 5 centimeter. So with this we complete off with exercise 18.1. Now the second topic is regarding your construction of circle, where you need to take your compass. Compass आपको ऐसे पता है ना, ऐसे लेना है. तो मुझे लगता है आप प्रीवियस क्लास में भी इस कंस्ट्रक्शन को सीखे होंगे. So with your compass and with your divider you can draw the circle. So in this topic just go through the examples whatever is given to you, and here in exercise 18.2 here you have to draw the circles. आपको draw करना है circles को. तो यहाँ पर देखिए 5 centimeter
एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे कि कंपास में आप 5 सेंटीमीटर जो रूलर है उसमें 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करोगे और आप एक जगह पे एज ए सेंटर पॉइंट रख के कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करोगे एंड दैट विल गिव यू अ सर्कल विथ रेडियस 5 centimeter. So as you know that we are going to conduct MCQ, so here in this exercise you need to construct everything, so you need not go to this exercise. आपको ये exercise as a revision you will be given. So ये exercise आप थोड़ा सा practice कीजिए, तो ये आप नेक्स्ट जब आपका क्लास होगा उसमें आप अच्छे से इन सभी को पढ़ पाओगे, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर जस्ट गो थ्रू 18.1 एक्सरसाइज प्रॉपरली वेर यू हैव बीन गिवन विथ डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। सो जस्ट गो थ्रू एक्सरसाइज 18.1। 18.2 ओमिट है, सो डोंट गो फॉर दिस एक्सरसाइज। यदि आपको ये एज अ एक्स्ट्रा थिंग you want to learn, you can learn from the examples given in the textbook. So with this we end up with the chapter circles. Thank you.